The Prime Minister's office has thousands of directives, hundreds of committees, and many questions. What's urgent? What's delayed? What needs attention today? Today, the Prime Minister's office system is live, and every question has a clear, simple answer. One dashboard for data-driven and AI-powered decision-making, bringing deliverables, initiatives, and bottlenecks into a single view for the Prime Minister. The Prime Minister's office can see every directive issued, every committee formed, who it is assigned to, where it stands, what is delayed. And for any single issue, artificial intelligence brings the whole picture together. Every linked directive, every status, in one clear view. Since every directive is tracked, when something stalls between departments, it no longer disappears, it surfaces, and the right department answers for it. The Prime Minister's office system is governance reimagined, AI native and data driven, now live. Sir, over the last 2 years, आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है on digitization of the government systems, including e-office, जो हमारा सर बड़ा flagship initiative है और वो पहले ही साल में हो गया 100% उसकी इस वक्त compliance है पूरी गवर्नमेंट में. सर PM ऑफिस के ऊपर भी आपने सर काफ़ी दफ़ा बात की और बहुत ज़्यादा खुद टाइम भी दिया इसको और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी एलेबोरेट करने में सर हमारी बहुत मदद की. सर जो हमारा पहला सिस्टम था टास्क मैनेजमेंट का, वो ज़रा रूडामेंट्री था. उसमें हमारे पास डायरेक्टिव्स कैप्चर तो बिल्कुल हो रहे थे और उनकी जो गिवन टाइमलाइंस थी वो हो रही थी, बट वो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन रखता था. उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम हमें ये देखने में आया सर कि जो टाइमलाइंस मिस हो रही थी तो वो बता रहा था, लेकिन प्रोडिक्टिव एनालिसिस उस तरह से नहीं दे रहा था. अब अगर एक चीज़ को 4 महीने में होना है और 4 महीने के बाद पता चले कि वो नहीं हुई, तो उसको फिर वापस जाकर तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके अंदर कई स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, कई इंटरडिपेंडेंसीज हैं, वो अगर चीज़ ना हो सके अपने टाइम पे तो बाद में देयर इज़ नो पॉइंट इन क्या कहते हैं क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. इस तरह हमारी सर पेंडेंसी बहुत सारी जगहों पे मिनिस्ट्रीज़ में बढ़ रही थी और उसमें होता ये था कि जब भी हम रिव्यू करते थे विद रीजंस, द मिनिस्ट्रीज कम अप विद द रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशंस के देखें यहाँ पे ये मसला हुआ है, यहाँ पे ये मसला हुआ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी एक्सटेंशंस दे दें. तो ऑल द टाइम वो डेटा जो है वो फिर एक जस्ट नंबर्स में कन्वर्ट हो गया कि इतने हज़ार डायरेक्टिव्स हैं और इतने हज़ार हो गए हैं और इतने 100 रह गए हैं और इसमें अब एक्सटेंशंस आ रही हैं. तो वो एक किस्म का रूटीन और रट में चला गया सर. उसके अंदर एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टिव इटसेल्फ कि उसके अंदर क्या डिटेल होनी चाहिए, कितनी डिटेल में उसकी रिक्वायरमेंट्स एलेबोरेट होनी चाहिए, वो सब सर फिर कैप्चर की गई. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को आपने ये कहा कि सेक्रेटरी कॉमर्स फलां एम्बेसडर से मिलें, वो मीटिंग हो गई और उसकी टिक बॉक्स भी हो गया, वो डायरेक्टिव कंप्लाई हो गया, बट उसकी कोई आउटपुट या आउटकम तो एज सच नहीं आई ना, क्योंकि उसको तो आपने मिलवाना था किसी एक्सपोर्ट के रिलेटेड काम के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. तो उस पर एक्चुअली बाद में क्या हुआ, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी, या अगर कहीं कोई हिकअप था वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, वो डायरेक्टिव इटसेल्फ कैप्चर नहीं कर रहा था. सो इस तरह की तमाम चीज़ें कि डायरेक्टिव में उसके माइलस्टोन्स, डिपेंडेंसीज, उसकी आउटपुट, उसकी आउटकम, और अगर कोई काम हो गया है तो उसके अंदर फिर इससे आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को सर अब नए सिस्टम में कैप्चर करने की कोशिश की गई है. फिर उसके ऊपर आपने चूँकि ये भी बड़ी दफ़ा बताया सर कि AI से भी हम मदद लें, और हमने चूँकि इसको बनाना भी सॉवरन था, हम कोई ओपन सोर्स नहीं ले सकते थे कि ये डेटा सारा बाहर ना जाए, तो उसके ऊपर फिर काफ़ी एफर्ट की सर PDA की टीम ने. PMDU के हेड सर मुशर्रफ साहब के आने से देयर वाज अ सी चेंज, एक ओनरशिप आई, एक प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में हमें सपोर्ट मिली. सर डॉक्टर सुहेल एंड हिज टीम एट पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी हु एग्जीक्यूटेड दिस, मिनिस्ट्री सर, सेक्रेटरी साहब, सर नीडलेस टू से इन तमाम लोगों ने वीकेंड्स पे आपकी हिदायत के ऊपर, आपकी डायरेक्शन के ऊपर दिन रात देखे बगैर हमारे साथ 6-6 घंटे समटाइम्स एट ए स्ट्रेच लगाए हैं. एंड दैट इज़ वाई वी कम वेयर वी हैव सर. क्योंकि ये सर आसान काम नहीं था. एंड आई हैव टू मोस्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज के आपकी जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, आपकी थ्रू आउट जो रहनुमाई थी, जिस तरीके से आपने इसकी तकरीबन वीकली फॉलोअप्स खुद ज़ाती तौर पे करके, और अपनी जो आपने डिलीवरी खाली ये नहीं देखा कि क्या चाहिए, मगर आपने ये देखा कि बेस्ट सिस्टम जो है उसको आपने इंश्योर करवाया. उससे डेडिकेशन के बगैर एंड डिटर्मिनेशन के बगैर शायद ये मुमकिन ना होता. एंड सर आई हैव टू एक्नॉलेज, आपने बहुत हमारे साथ पेशेंस का भी मुजाहरा किया. देयर वर मैनी पिटफॉल्स दैट केम इन द वे, बट यू वर काइंड इनफ टू बी पेशेंट एंड सपोर्ट अस थ्रू आउट सर.
सर हम आपको गवर्नेंस काफ़ी देर से देख रहे हैं 2010-11 में आपने टेली कॉन्फ्रेंसेज यू हैव मैनी फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू डिजिटाइजेशन एंड प्रोग्रेस एंड जैसे आपने अभी फरमाया कि सेविंग द नेशंस टाइम एंड रिसोर्सेज आपने 2010-11 में टेली कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की ताकि पंजाब के अंदर जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे लोगों को गाड़ियों पे दफातर में आना ना पड़े, आप टेली कॉन्फ्रेंसेज से करते थे। इसी तरीके से सर फिर आपने जब आप फेडरल में आप गवर्नमेंट में आए हैं, आज साहब ने जैसे कहा आपने ई ऑफिस जो कि साल से ना हो पाया था, आपने 6 महीने के अंदर वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पेपरलेस गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू आर ई ऑफिस। हम उसके ऊपर आपकी एफिशिएंसी, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सर ट्रांसपेरेंसी है इस वक्त, जब आप हर फाइल जो है आप एसओ लेवल तक आप देख सकते हैं कहाँ है, कितनी देर लगी। सर उसके बाद आपने इसी तरह से अगर मैं आप एक और स्ट्रक्चरल फर्स्ट आपका करूँ तो जो डिजिटल से डिजिटाइजेशन आप वहाँ पे लेके आए, दुनिया का तकरीबन सर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हम रन करते हैं उसको आप डिजिटल कर दिया। इसी तरीके से सर आज जो है हम डिजिटल से इंटेलिजेंट एरा में आपकी रहनुमाई में मूव कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग एन एआई लेड ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके ऊपर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर कराई जाएगी। और जैसे कि अभी आपने भी कहा कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये तमाम चीज़ें इनसे मुमकिन हो सकेंगी। मैं सर रिक्वेस्ट करूँगी कि मुशर्रफ साहब एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं सर। Sir, the genesis of this system is that you're directed that to create a clear system solution to anchor government's reform agenda, get effective policy implementation, and define governance as high-quality policy analytics, timely implementation, tracking of well-defined completion outputs, documentation of data post-completion to assess results, and optimize a system that builds on the 3 foundations of discipline of process, performance consequences, and quality of outputs. Now, the reason for showing this is that if such complex and intricate relationships or policies are to be implemented, then only a credible intelligence system can be a foundation on which this could be built. Now, so PMOS is a system solution to achieve effective implementation under your directions. Number 1 is government's reform agenda, sir. The government is pursuing, as I was saying, interconnected reforms to raise incomes, drive growth, and improve lives across Pakistan, as you just said. And to get to that agenda, a detailed governance mechanism ensconced in a system is required where policy decisions can be tracked to effective implementation and outcomes can be documented. As technology is refining governments, so this was the time to bring in AI, as the Minister IT has mentioned. And said an implementation gap was needed in closing what your directions are and what gets done at the ministry level, and how is it documented, and what are the consequences and policy results. Then, sir, as you said, the value of this system will be measured only by the difference it makes in the lives of ordinary Pakistanis. So PMOS functionalities and governance, I would just like to describe 3 elements here, sir. One is the policy calibration and documentation. The part is that it has to enable that day-to-day policy calibration informed by data is documented well and is communicated to the implementing agencies, ministries or divisions or other attached bodies. It has to be a dynamic repository of directives that carry a complete record of actions, and finally it should develop an internal intelligence. Only if we have internal intelligence of data, of contacts, of what is to be done, artificial intelligence can read that and provide us the answers. Artificial intelligence, sir, I think a great thing is that with Minister IT's leadership and PD's work, sovereign AI layer is now being built that reads, classifies, interlinks directives, and ultimately this work will improve as we can provide it more information. One other feature, sir, that under your directions has been built in the system is anticipatory governance. So rather than waiting for a deadline to pass and then do something about it, the system is going to generate timely alerts and ensure that the action is taken in time. Then the reports will be structured so that enough information is there for decisions and performance evaluation. Sir, the heart of the governance is the Prime Minister's office, and therefore this system, of course, will be now aiming to convert resources and opportunities into better for Pakistan, sir.
So as I mentioned, your vision was to create this as an anchor of government's reform agenda, set key priorities, but link it deep into the ministries so that implementation can happen and can be observed where it has to take place. It will be recording everything accurately so that the system learns itself and provides a decision support system at the Prime Minister office level as well. Sir, just last, sir, the job of the or responsibility of the GRE would be continual augmentation of the system solutions, sir. In this, sir, it will generate fortnightly compliance reports, process them for the Prime Minister APM review, carry out system level follow-ups to ensure compliance, identify governance failures behind delayed implementation, because ultimately we want to resolve things and improve the system, not only generate reports, sir. And identify high salience directives, sir, which will be your high priority policy areas, and place them in a special monitoring regime so that that receives a level above others, sir. Sir, thank you so much, sir. I just wanted to present this. Thank you, sir. Let us give a big hand to everybody. Now, from today onwards, I will not expect any of you in my office with a file in your hand. Everything will be discussed through this mechanism. Please make it very clear in your minds and that this is the mode and the system we are going to work through from today onwards. I'd like to thank Muhtarma Shahzad Fatma, Secretary IT. I had to really work very hard with them, but then they were willing partners and they've worked smoothly and efficiently. And once again, thank you all, and I'd like to request all of you to now take a full interest in this mechanism. This is going to make your life easy in terms of delivery, and in the end of the day, if Pakistan is served, I think you are then a great hero.